Hello guys, welcome back to my channel Gravity Take. This is the next video on C programming series. In today's video, we'll continue from the point where we left in the previous session. So if you haven't watched the earlier videos, then I would recommend you to go through those to know what has been already covered. Okay, now let's look at what is the agenda. In today's video, we'll cover the next part of the conditionals. As we saw in the last video, C conditional statements are actually categorized into 5 different types. If else, nested if else if ladder, and switch. In this video we will going to cover first 4 and then the switch will be covered in the next video. Okay, as we have already covered the if conditionals, now it's time to cover the nested if. What is a nested if? Nested means one inside another. So if inside if is what we call it as what? Nested if. Nested if is an if statement which contains another if or else. So nested ifs are very common in a programming language. You can see the syntax of nested if here. So if you look at here, right, if test expression 1 is true, then go inside, and then if test expression 2 is also true, then go inside. If test expression 3 is also true, then go inside. So this particular code will be executed only when text expression 1, expression 2 and expression 3, all of 3 are true. And then if that doesn't happen, right, there is else part. So we'll actually see that in the code. But remember, this is what the syntax is. Okay. Now, this is if else flow with the example. Okay. So what is the example of here, right? What example are we considering? We have taken the example of finding out or identifying the number, whether it is even or odd, right? Now we know the test to check the number even or odd. We simply divide that number by 2, and then if the remainder is 0, then that means that number is even number. If the remainder is not 0, then it is odd number. So it's pretty simple. So the user will enter the number. We will check this condition, number %2 means remainder. So number %2, if this comes to 0, that means true, then it is even, otherwise it will be false and the end, right? This is what it is. We'll cover the example soon. Right, now let's look at what is if ladder. Now we know that if statements are executed from top down, if statements are executed from top down. Okay, now if ladder helps us to decide from among the multiple options. Now you have this option, you have this option, you have this option, you have this option, right? So among this, only one option will be selected when you are executing if ladder. Okay, so as soon as one of the conditions controlling condition 1, condition 2, condition 3, one of the conditions controlling this comes true, in that particular block of the statement, it will go and it will execute that block. Okay, it's pretty simple. And if none of the conditions meet to true, अगर condition 1, condition 2, condition 3 तीनों में से कुछ भी अगर true नहीं होता है, then it will simply fall into where else part. So it will execute the else part. Okay, so that's how the if ladder is, and the syntax is pretty simple. If the normal if, then else if there is a space inside else, and if else or if के बीच में space है, remember. Okay, so if you remember, if you look at here, right, else if के बीच में space है. This else is optional, so it is not required to have the else at the end. It is totally optional. This is just if ladder is given in terms of flowchart. सो आप यहाँ से एग्जीक्यूशन यहाँ से इंटर होगा, इट विल चेक इफ ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इस इफ के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो अगले इफ को चेक करेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी फॉल्स है तो अगले इफ को चेक करेगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये फॉल्स है तो इस तरह से. सो दिस कंटिन्यूज. ओके, नाउ
let's look at the examples. Okay, we will basically go to the examples. Yeah, so I have tried to create the separate files to help you out. This if statement we already saw in the last video. Let's look at the if else. Okay, let's take an example. Let's write a program to check if the student is passed or failed. Now हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स, और हमको ये चेक करना है कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर पास हुआ है तो उसको डिस्टिंक्शन मिला है, फर्स्ट क्लास मिला है, सेकंड क्लास है, पास क्लास मिला है। सो इसमें से हमको उसको वी नीड टू बेसिकली फाइंड आउट which class or mm, in which class he has passed if he has, otherwise whether he has failed. So सिंपल है, अगर 70 से ऊपर मार्क्स है तो डिस्टिंक्शन आएगा, 60 से ऊपर है और 70 के बीच में मार्क्स है तो फर्स्ट क्लास है, 45 और 60 के बीच में है तो सेकंड क्लास है, 35 और 45 के बीच है तो पास क्लास है, और अगर 35 से नीचे है तो क्या, फेल। अभी इसी को हम लोग इफ एल्स में कैसे लिख पाएंगे? So let's look at how we can write that, right? So simply as usual we have write the main function. उसमें हम लोगों ने मार्क्स ले लिया, मार्क्स इज गोइंग टू बी लाइक परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो फ्लोट में हो सकता है, डेसिमल पॉइंट्स में, सो परसेंटेज मार्क्स। वी आर आस्किंग यूजर टू इंटर द मार्क्स, सो यूजर मार्क्स इंटर करेगा जिस स्टूडेंट के भी क्लास उसको फाइंड आउट करना है, विच क्लास ही बिलोंग्स टू, राइट, और इन विच क्लास एक्चुअली हैज पास्ड। सो यहाँ पे हम लोगों ने we just actually got that input and stored into the marks. Now let's look at the logic if nested if कैसे है। हमको पता है अगर मार्क्स अगर 35 से ज्यादा है तभी वो पास होगा, तो ये पूरा जो है इफ के अंदर वाला पास का ब्लॉक है, मार्क्स 35 के अंदर हुआ तो, राइट, सी। और अगर 35 से कम है, इफ 35 से अगर कम है तो इट इज व्हाट, फेल्ड। वी विल से बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम यू फेल्ड इट। Yes. So this block is for pass and that block is for fail. Now inside pass again we have some other conditions. पास होने के बाद भी, राइट, 35 से ऊपर मार्क्स है लेकिन कितने मार्क्स है, अगर वो चेक करना है, राइट, तो वी नीड टू अगेन पुट डाउन सम कंडीशंस, राइट। मार्क्स, नाउ नेक्स्ट कंडीशन अगर 35 से ऊपर है लेकिन हैव यू गॉट मार्क्स ग्रेटर देन 45, अगर 45 से ऊपर है तो अगर वहां पे कुछ ब्लॉक है, अगर 45 से नीचे है और 35 के बीच में, सो इफ द मार्क्स आर बिटवीन 35 एंड 45, इट विल जस्ट सिंपली से हे कांग्रेचुलेशंस यू पास्ड विद द पास क्लास, आपको पास क्लास मिला है। अभी अगर 45 से ऊपर है तो और देयर इज समथिंग एल्स, राइट, इनसाइड। सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, अगर 60 से नीचे है तो विद सेकंड क्लास, इफ इट इज 70, राइट, अगर 70 से नीचे है तो फर्स्ट क्लास, अगर 70 से ऊपर मार्क्स है तो व्हाट, डिस्टिंक्शन। इट्स प्रीटी सिंपल। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। So when we execute, right, let's maybe try to enter something less than 35. So it will say, hey, best luck next time, you failed, right? Let's try to enter something, let's say 67. So this should be first class, first class. So it's pretty simple. So when you, depending on what marks are you entering and then which condition is true, it will actually go inside the respective block and then execute that portion. Now what is else, if ladder, right? Simply so the same program will continue, but here instead of nested if, we will use if and else if ladder. Now it's pretty simple. Same thing, user will enter the marks. Now we know that percentage marks cannot be negative or greater than 100. अगर कोई यूजर 0 से नीचे मार्क्स इंटर कर रहा है फिर 100 से ऊपर इंटर कर रहा है तो गलत है, तो ये वाला that condition we have kept it here. So if marks are less than 0 or marks are greater than 0. Now this or is a logical or, remember. So इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है, not both,
एक भी अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इट विल जस्ट सिंपली से hey no, the percentage marks which you have entered are incorrect and enter the correct number in between 0 and 100. सेकंड, अगर 0 से नीचे नहीं और 100 से ऊपर नहीं, इसका मतलब whatever data, whatever marks user has entered, those that actually falls in between 0 and 100. तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं else if मतलब अगर ये नहीं हुआ तो चेक करो कि मार्क्स 70 से ऊपर है क्या. अगर 70 से ऊपर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट अ डिस्टिंक्शन, राइट. सो 70 और 100 के बीच में, दिस इज द इंटरवल. अगर ये भी नहीं है ट्रू तो नेक्स्ट एल्स इफ अगेन मार्क्स लेस देन 70 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, 60 है क्या. एंड नाउ दिस इज लॉजिकल एंड मतलब क्या, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए. सो दिस हैज टू फॉल इन दिस. ओके, 60 से बड़े और 70 से छोटे, 70 इंक्लूड नहीं होगा. सो इट विल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, you are in pass first class. So similarly else if 45 और 60 के बीच, else if 35 और 45 के बीच पास क्लास के लिए, और अगर 0 to 35 है तो it will simply say failed. Now let's try to execute it. Right, now let's try to enter something negative value. It will say incorrect value. Right, let's try to enter now something which fails. You are failed. Let's try to enter maybe something distinction. You are a distinction. So this is how it is. Okay, so it's simply, now in next video we will going to look at what exactly the errors or mistakes you can make it, right, and it's probable, and then how you can basically avoid those mistakes, and how you can make those programs more efficient. Okay, now this is what we have seen. So this is what I had it from this video. So in next video, we will continue on with the more examples of if, else if, and then the troubleshooting and debugging part, and how you can basically develop a conditional quality of C programs with the conditionals and the switch case. So thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe, and share if you haven't done so. Happy learning with the Gravity Tech. See you in the next video. Thank you.